segment, have you ever wondered why? Have you ever wondered why? Is it hard to walk uphill than down? क्यों इतना मुश्किल है चढ़ाई पे ऊपर जाना और स्लोप से नीचे आना? जनरली जब हम ऊपर चढ़ते हैं, किसी भी बिल्डिंग में सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारे मसल्स ज्यादा काम करते हैं और हम ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कंपेयर टू जब हम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है बच्चों? ये बात निश्चित है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, पेड़ पौधे, चट्टान, पक्षी, सभी को नीचे की तरफ खींचती है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के कारण हम इस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे चल पाते हैं, वरना हम सभी उड़ने लगते हैं। जब भी इस अर्थ की सरफेस से हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, तो हमें इस ग्रेविटी के अगेंस्ट बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल आप एरोप्लेन या रॉकेट के रूप में देख सकते हैं। यूजुअली आपको जब चट्टान के ऊपर की तरफ जाना हो, तो आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पूरे वेट को वो लिफ्ट करके अगेंस्ट द ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हमको ऊपर की तरफ। अब आपकी बॉडी अगर इतना ज्यादा काम कर रही है, तो वो कैसे काम करती है? सबसे ज्यादा हमारा हार्ट काम करेगा। हार्ट जो है बहुत जल्दी रैपिडली पंप होने लगता है, बहुत ज्यादा ब्लड रिक्वायरमेंट हो जाएगी सेल्स को, बॉडी के सेल्स को बहुत ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हार्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन इनहेल हम ज्यादा करते हैं। इसीलिए जो भी चढ़ाई होगी, जहां पे भी चढ़ाई होगी, वहां पे जब भी आप चढ़ाई में चढ़ेंगे, तो हमारी जो या आपकी जो सांस है वो बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत तेजी से चलने शुरू कर देगी, बहुत तेजी से चलना शुरू कर देगी। किसके कंपैरिजन में? जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलते हैं, हम जब सड़क पे, रोड पर चलते हैं, तब हमारा सांस इतना ज्यादा नहीं रैपिडली चलता है कंपेयर टू जब हम हिल पे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। कभी आपने फील किया है ऐसा? बिल्कुल किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम चढ़ाई पर या ऊपर की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। हमारी पूरी बॉडी का भार हमको ऊपर की तरफ ले जाना होता है, अगेंस्ट जो धरती हमको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन हमको उसके अगेंस्ट काम करके ऊपर की तरफ जाना है, तो हमको ज्यादा मसल पावर लगानी पड़ेगी, हमारे हार्ट ज्यादा काम करेंगे, हमारे लंग्स ज्यादा काम करेंगे। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं, तब हमारी मसल्स को उतना काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑलरेडी है, वो हमको भी नीचे की तरफ खींचता है। तो हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, तो हमें उतना काम, हमारी मसल्स को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई व्हेन वी वॉक डाउन अ हिल, very little energy is required because the body is carried down to slope due to earth gravitational pull. This is why our muscles do less work and we do not feel tired while walking down a hill. Okay? Try these multiple choice questions at home. What is the force that pulls objects towards each other? Magnetism, gravity, friction, or electricity? Right answer is gravity. Why do objects fall towards the ground when dropped? Because of air resistance, because of gravity, because of magnetism, because of friction. Right answer is because of gravity. What happens to an object when it is thrown upward? First, it keeps going up forever. It floats in midair. It comes back down to the ground, or it disappears. Correct answer is C. Why do we feel heavier on the ground than in a swimming pool? Options are because of the buoyancy, because of the gravity, because of the friction, because of the magnetism.
What is the force that keeps us on the ground? Options are magnetism, gravity, friction, or electricity. Correct answer is gravity. Why do objects weigh less on the moon than on the earth? Options are because the moon has less gravity, because the earth has more gravity, because the moon is similar, because the earth is larger. Correct answer is next question. Why do we feel tired when walking uphill? Options are because we are walking too fast, because our body needs to work harder against gravity, because we are not wearing comfortable shoes, or because we are not drinking enough water. Correct option is what happens to our breathing when we walk uphill? Options are it becomes slower and shallower. It becomes faster and deeper. It remains the same. It becomes irregular. Correct option is why do our legs feel heavier when walking uphill? Options are because we are carrying heavy backpacks, because our muscles needs to work harder to lift our body weight, because we are walking on uneven terrain, or because we are not stretching enough. The correct option is now describe the relationship between gravity and our body when walking uphill. When walking uphill, our body needs to work harder against gravity to move upward. Gravity pulls our body weight downwards, making it more difficult to lift our legs and take steps. Explain why need to take breaks when walking uphill. Answer is take breaks when walking uphill because our body needs time to rest and recover from the extra effort or working against gravity. Our muscles need to replenish energy stores and our heart needs to slow down to recover from the increased workload. Answer. Question number 3. Compare and contrast walking uphill and walking on flat ground in terms of energy expenditure and physical demands. Answer is walking uphill requires more energy expenditure and physical demand compared to walking on flat ground. When walking uphill, our body needs to work harder against gravity, which increases the workload on our muscles, heart, and lungs. In contrast, walking on flat ground requires less energy expenditure and physical demands, as our body can maintain a steady pace without having to work against gravity. That's all for now.